In Yes, our sir. Yes, last sir. class, we have studied graph, right? Yes, sir. Okay, position time graph we have learned, then velocity time graph, acceleration time graph we have learned. Okay, so today let's solve few problems. Okay, let's solve few problems today. कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिखिए. Position time graph. For a moving along a straight line. Position time graph for a body moving along a straight line is shown in the figure. Is shown in the figure. Okay, position time graph. क्लासरूम आप लोग का वीडियो म्यूट करके ऑडियो म्यूट करके रखिएगा. Position time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find the displacement and distance traveled in 6 seconds. Okay, the graph is like this, position time graph. CPSP क्लासरूम में आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर साउंड नहीं आ रहा सर. क्लासरूम का आप लोग का माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट करके बाकी सब काम कीजिए. CPSP माइक म्यूट रखिएगा आप लोग, क्लासरूम में माइक म्यूट रखिएगा. Okay, so position time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find the displacement and distance traveled in 6 seconds. ये ग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ. This is the graph. Position time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find the displacement and distance traveled in 6 seconds. Sir, distance 10 meter or not, sir? No. Distance or displacement. You'll have to find both distance and displacement. Both you'll have to find. Position time graph for a body moving along a straight line. Position time graph दिया हुआ है.
इजी, वेरी इजी, आप लोग को फटाफट आ जाना चाहिए। आया कि नहीं? ओके, आप लोग देखिए, यू सी द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यहाँ से स्टार्ट करो, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, जीरो, यहाँ से स्टार्ट हुआ। The body start from zero. It start from zero and has gone to this point. This point. Yeah, point. It has gone to this point, whose position is 20 meter. It has gone to this point. Position is 20 meter. सर 20 तो सर क्वेश्चन में नहीं दिया सर। ये 20, ये देखिए, ये दिया हुआ है 20। सर ये क्वेश्चन के साथ है क्या सर? हाँ, ये तो फिगर दिया है, is shown in the figure. ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है सर। So it starts from zero. यहाँ से शुरू किया, zero से शुरू किया. It starts from zero. Gone to this point, the corresponding position is 20. So यहाँ से 20 तक गया, 20 तक गया, 20. And finally it is here. Finally it is at this point. Finally ये point है, ये point, final point. Finally it is here. 6 seconds में, time दिया है 6 seconds. Finally it is here. ये point corresponding position is 10 meter, मतलब 10 meter यहाँ होगा. So यहाँ से वापस आ गया 10 meter. So displacement, what is the definition of displacement? Displacement का definition क्या है? Shortest distance between initial and final position. ये initial position है, ये final position है. ये final position है, ये initial position है. Shortest distance displacement होगा यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर 10 meter. 10 sir. 10 meter. And displacement is the length of the path. Distance is the length of the path. Distance traveled is the length of the path. Path का length क्या है? देखिए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया, फिर वापस आया यहाँ से. So यहाँ से यहाँ तक कितना गया है? 20 meter. और यहाँ से यहाँ तक कितना आया? It has come from here to here. यहाँ से यहाँ तक 10 meter आया, 10 meter. $30 meter is the distance. Any problem? किसी को कोई problem है इसमें? Okay, next problem आप लोग लिखिए. Next problem, position time position time graph. Position time graph for
two bodies A and B moving along straight lines is shown in figure. Position time graph for two bodies A and B moving along straight lines is shown in figure. Find the ratio of their velocities. Find the ratio of their velocities. Okay, so graph is like this. Position time graph. आप पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का समझिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। Position time graph for two bodies A and B moving along straight lines is shown in figure. Find the ratio of their velocities. मिला आप लोगों को? आया कि नहीं आंसर? अच्छा, दो बॉडीज है यहाँ, ये बॉडी ए है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, ए बी। Now position time graph for two bodies A and B moving along straight lines is shown in figure. Find the ratio of their velocities. सर इस ग्राफ को थोड़ा समझा दीजिए सर। इस ग्राफ को क्या है कि दो बॉडीज जा रहे हैं ए एंड बी, ठीक है, दो बॉडीज है ए एंड बी और दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। हाँ, दो बॉडीज है ए एंड बी, दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप लोग देखिए ये जो लाइन है x इक्वल्स टू y लाइन, ये लाइन देखिए x इक्वल्स टू y लाइन। व्हाट डज दिस x इक्वल्स टू y लाइन मीन? ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, हाँ, ये x इक्वल्स टू y लाइन है।
ये x इक्वल्स टू y लाइन है, ठीक है, x equals to y line. What does x equals to y line mean? ये लाइन जो है ये x equals to y line है, ये x equals to y line है. What does x equals to y line mean? x equals to y line का मतलब क्या है? x equals to y line का मतलब है ये equal angle करेगा with x axis and y axis. This line will make equal angle with x axis and y axis. इसका मतलब है with x axis angle is 45 degree. ठीक है, x equals to y line का मतलब है it will make equal angle with x axis and y axis, which means it will make 45 degree with x axis and 45 degree with y axis. 45 degree. अगर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, how much will be this angle? 30 degree sir. 30 degree. Position time graph दिया हुआ है. The position time graph is given, and velocity is what gives us velocities. If position time graph is given, what gives us velocities? Displacement by slope. और slope हम कैसे लिखेंगे? tan theta. Position time graph दिया हुआ है, and we want to find velocities. So slope gives us velocities, and slope we write tan theta. So velocity of A. Velocity of A is 1030. 1030 का कितना है? How much is 1030? 1/√3. Okay. अब B देखिए, B का एंगल कितना हो रहा है? ये B का लाइन है, ये लाइन B का है. एंगल कितना हो रहा है? ये एंगल कितना एंगल हो रहा है? ये एंगल 45 plus 15, 60 degree. 45 plus 15 is 60. So velocity of B is 1060. 1060 का वैल्यू कितना है? √3. हमें रेशियो कैलकुलेट करना है. We want to calculate ratio. Therefore, रेशियो का मतलब VA by VB कितना है? 1/√3 is to 1/√3 into √3. So 1:3. सर रेशियो का मतलब डिवाइड करना. हाँ, रेशियो का मतलब डिवाइड करना है. ठीक है, सबको आया? समझ में आया सबको? सर ये x इक्वल टू y, सर वो थोड़ा समझा दीजिए. x इक्वल टू y कैसे सर? वो जो x इक्वल टू y. हाँ, ये x equals to y मतलब क्या है? ये जो लाइन होगा x equals to y वो 45 डिग्री x एक्सिस के साथ बनाएगा. ये you have to remember this one. x equals to y line it makes 45 degree with x axis. ये याद रखना है आपको. मैथमेटिक्स में आप लोग ये सब पढ़ेंगे. x equals to y line makes 45 degree with x axis. ठीक है सर. जी सर. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए. नेक्स्ट वन. Velocity time graph. Velocity time graph for a body moving along a straight line
is shown in figure. Find the displacement and distance traveled in 6 seconds. Find the displacement and distance traveled in 6 seconds. Velocity is in meter per second. Time is in seconds. Velocity time graph for a body moving along a straight line shown in figure. Find the displacement and distance traveled in 6 seconds. एक ग्राफ दिया हुआ है. You got मिला आप लोगों को? Velocity time graph is shown in the figure. Displacement and distance traveled दोनों कैलकुलेट करना है आप लोगों को. Yeah. You see, velocity time graph is given. आप लोग याद है कि velocity time graph is given, and you want to find displacement and distance traveled. Displacement and distance traveled. आप लोग देखिए, displacement and distance traveled calculate करना है. Displacement and distance traveled. Now, if you are given velocity time graph, अगर आपको velocity time graph दिया गया है, then what gives you displacement? Yeah, area sir. Area. ठीक है, area. So displacement is equals to area. ठीक है. So what we will do, we'll find this area and we'll find this area. Triangle है. These are triangles.
So area of a triangle, this triangle, you see this triangle. Area of a triangle, what is the formula for area of a half into triangle? base into height. Half into base into height. Half into base into height. Okay. So this much is base. From here to here is base. From here to here. And from here to here is height. Okay. So from here to here is base. From here to here is base. And from here to here is height. 4 आ जाता है सर ये ट्रायंगल का एरिया. So half into base is 4, height is 10. And then this triangle, you see, from here to here is base. For this triangle, from here to here is base. From here to here is height. So from here to here is base. Base kitna aayega? 2. And from here to here is height. And this triangle has negative area. Triangle ka area negative hoga. So minus half, base is 2, height is 10. So kitna aayega? 10 meter. This is the displacement. Okay. So area under velocity, आप वो point पढ़िए, आपने जो point last class में लिखा है, whatever you have written, area under velocity time graph gives us displacement, or area distance traveled also it gives us. Area gives us both displacement as well as distance traveled and distance traveled. So distance traveled में हम जब जाएंगे, distance traveled में क्या होगा? Half into base into height. ये प्लस हो जाएगा, इसका एरिया और इसका एरिया हम प्लस कर लेंगे डिस्टेंस के लिए. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो इसका मतलब कितना आया? 30 मीटर. सर जी सर वो दूसरा ट्रायंगल का बेस टू सर, दूसरा ट्रायंगल का बेस टू कैसे है सर? 6 minus 4 2. यहाँ से यहाँ तक बेस है, ठीक है. 6 minus 4 2 हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक बेस है, यहाँ से यहाँ तक बेस है. ये सर सर वो सर another why we do not consider this area sir? Why? Sir, below the triangle sir, that area trapezium और यहाँ ट्रापेजियम कहाँ हुआ है? ट्रापेजियम नहीं सर, वो जो सर पैरेललोग्राम कहाँ है यहाँ? सर 0 to -10 सर, वो जो एरिया सर. कौन सा एरिया? सर वो जो 0 to -10, वो जो 0 to -10 यहाँ तो एरिया है ही नहीं. वो तो एरिया हमने ये एरिया तो हमने कंसीडर किया, यही एरिया है. इसके अलावा और कोई एरिया है कि यहाँ ये एक एरिया है और ये एक एरिया है? सर इस ट्रायंगल का बिलो सर, उस यही सर, ये वाला यस सर. ये एरिया हुआ एक. ये तो एरिया नहीं है. एरिया आप क्वेश्चन तो पढ़िए एक बार. हाँ, और उस दिन हमने जो लिखा है वो पढ़िए. क्या लिखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? क्या लिखा था? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़िए आप लोग. यहाँ तो कोई ग्राफ ही नहीं है. इस पोर्शन पे कोई ग्राफ ही नहीं है ना. ग्राफ होना पड़ेगा. ग्राफ तो ये है, ये ग्राफ है. इसका अंडर जो एरिया होगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस ग्राफ विद टाइम एक्सिस. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये एरिया बाउंडेड, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ग्राफ है. इसका अंडर जो होगा विद टाइम एक्सिस. हाँ, सो ये टाइम एक्सिस है. क्योंकि ये एरिया बाउंड किया ये ग्राफ में. नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग देखिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम, पोजीशन टाइम ग्राफ. Position time graph for a particle. Position time graph for a particle moving along a straight line. Position time graph for a particle moving along a straight line is shown in figure. Position time graph for a particle moving along a straight line is shown in figure. Find average
speed in the interval. Find the average speed in the interval 0 to 8 seconds. Find the average speed in the interval 0 to 8 seconds. Times in second, 8 seconds, 0 to 8 seconds. Okay, you try this problem. Position time graph is shown in the figure. Moving along a straight line. Okay. Average speed निकलना है आपको. Okay, you got. You want to find what you want to find? आप लोग को क्या निकलना है? Average speed. Average speed. Okay. Yeah, average speed you want to find. You want to find this average speed. Average speed you want to find. Average speed. In the interval 0 to 8 seconds. Average speed in the interval 0 to 8 seconds. You want to find average speed in the interval 0 to 8 seconds. Average speed interval is 0 to 8. And how do you define average speed? Sir, total distance traveled by time taken. Use that formula. Total distance traveled by time taken. Use that formula. Total distance traveled by time taken. ये फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिए. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल के लिए देखिए इनिशियली तो यहाँ है 0 में है. ओके, इनिशियली इट इज इन 0. इनिशियली इट इज यहाँ 0, यहाँ है इनिशियली. सो 0, इनिशियली इट इज 0. इनिशियली उसके बाद क्या हुआ? पहले 10 पे गया. Then it has gone to this point. This point is 20 meter. It has gone to this one. This point, which is 20 meter. Okay. Initially it was here. Initially it was here at 0. Initially it was here at 0. Initially it has gone to this point, which is this one, 20 meter. So it has gone from here to here. 20 meter. Then
Finally, it is here. Finally, 8 seconds. 8 seconds. 8 seconds. It is here. So again, it is 0. The position is 0. Again, it is 0. This one. Right? So finally, it is here. Again, it is 0. So it again came from here to here. Finally, it's here. So it has come from 0 to 20. Came back to 0. How much is the distance traveled then? 40, sir. 40 20 meters. plus 20, 40. 40 meters. And the average speed is distance by time. So 40 by time is 8 seconds. Yeah, this one is 8 seconds. Time is 8. 5 meters per second. सबको मिला? Sir, yes, sir, समझ में नहीं, sir. Again, sir, how it can be? Krishna, sir, please. ये देखिए, इनिशियली यहाँ था, ठीक है? इनिशियली यहाँ था, ये पोजीशन 0 हो गया, हुआ कि नहीं? इनिशियली. Yes, sir. फाइनली ये यहाँ है. फाइनली ये यहाँ है. इसका पोजीशन 0 हुआ कि नहीं? फाइनली देखिए यहाँ है, पोजीशन 0 हुआ. फाइनली ये यहाँ है, फाइनली तो इसका पोजीशन 0 हुआ. फाइनली यहाँ है, इसका मतलब पोजीशन 0 हो गया. बीच में यहाँ तक गया था, बीच में यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था मतलब 20 मीटर पे गया था बीच में. डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा. Suppose in this question you are asked find average velocity in this problem. Suppose you are asked find average velocity, कितना होगा वो बताइए. 0 सर, 0 हो जाएगा. 0. इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. 0 हो जाएगा. So average velocity कितना होगा? 0. अगर average velocity पूछा गया तो average velocity 0 हो जाएगा. ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आप सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. Next problem आप लोग try कीजिए. Next problem. Acceleration time graph of a particle moving along a straight line is shown in figure. At time t equals to 0, velocity of the particle is 10 meters per second. Find its velocity at t equals to 8 seconds. Okay, find its velocity at t equals to 8 seconds.
This is the graph. Acceleration time graph is given. You have to find its velocity at t equals to 8 seconds. सर क्या ये आंसर 16 मीटर पर सेकंड है सर? I'm not sure. आप लोग सब आंसर कैलकुलेट कीजिए कितना होगा और चैट पे लिख दीजिए, मैं देख लेता हूँ। अगर सारे का सारे को सेम आंसर आ रहा है तो करेक्ट होगा, अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है तो गलत होगा। याद देखिए, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, and you want to find the velocity. Now if acceleration time graph is given, what we know, acceleration time graph अगर दिया है तो हमें क्या है, what we know, एरिया क्या देता है हमें, चेंज इन सर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम है तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। और ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, दो एरिया है यहाँ। So change in velocity is final velocity minus initial velocity. Change in velocity is final velocity minus initial area. ये triangle के area कितना होगा, half into base into height. This triangle area is half into base into height. Half into base into height minus ये triangle के area half into base is this one 2. Yes, height is 4. Half into 2 into 4. So हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इनिशियल इज 8 दे दिया, 10 सॉरी, इनिशियल इट्स 10 दिया है, 10 इक्वल्स टू कितना आया, 12 minus 4, 12 minus 4. Final velocity from here we'll get final velocity, it's 12 minus 4 is 8 plus 10, 18 meter per second. Calculation आप लोग चेक कीजिएगा, all of you check the calculation. आप लोग कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। सर वो एरिया में सर वो माइनस किया सर जी सर वो सर एरिया में सर माइनस क्यों किया सर, कब माइनस करना है सर और कब ऐड करना है? आप लोग को तो ये ग्राफ तो पढ़ा है क्लास 9-10 में। ये देखिए, ये लाइन का ऊपर होने से हम प्लस लिखेंगे, ये लाइन के नीचे होने से माइनस लिखेंगे।
ये जो लाइन है उसका ऊपर होने से प्लस है, नीचे होने से माइनस है। ठीक है, ये लाइन का ऊपर होने से प्लस है तो नीचे होने से माइनस है। सर पिछले सर एक क्वेश्चन में तो सर प्लस दिख था। कौन से क्वेश्चन पे? वो हमारी स्पीड था, स्पीड में तो सर ऐड कर दो। हाँ, स्पीड में तो डिस्टेंस निकलना है, डिस्टेंस तो हम ऐड करेंगे हमेशा। नीचे होने से भी सर ऐड करेंगे सर। ऐड करेंगे, डिस्टेंस में ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में देखिए हमने माइनस किया। ठीक है सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हमने माइनस किया, डिस्टेंस में हम ऐड करेंगे हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. The velocity time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find its acceleration. Velocity time graph for a body moving along a straight line is shown in figure. Find its acceleration. सर क्या ये 1 मीटर पर सेकंड? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। Velocity time is in second. Time is in second. Velocity time graph. Then slope will give us acceleration. For slope हम tan theta लिखते हैं, tan theta. So this angle is theta. Suppose this angle is theta. Anyone you take, this side by this side is tan theta. This side by this side. Okay. So tan theta is this side by this side. देखिए ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा होता है तो वेलोसिटी डिस्टेंस एनीवन यू कैन टेक दिस साइड बाय दिस साइड. दिस साइड इज 3, दिस साइड इज आल्सो 3, 3 by 3. 1 meter per second square. जी सर, 1 मीटर पर सेकंड सही है सर.
ये सर ये समझ गया सर। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैं शेयर कर रहा हूँ। ये बताइए, ये प्रॉब्लम बताइए आप लोग। आंसर बताइए, फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सर 6 सेकंड। आप लोग पहले ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। सर ये 6 सेकंड हो। हाँ हाँ जी 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 जी। ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट टाइम टी टाइम निकलना है। The average velocity is 0. Average velocity is 0 or not? Average velocity should be 0. Question में पूछा गया है। You will have to find time t at which the average velocity is 0. Average velocity is 0. So average velocity, how do we define average velocity? Total displacement by time taken. हाँ, so displacement by time taken. अगर average velocity 0 होता है तो displacement भी 0 होना जरूरी है, ठीक है? If average velocity is 0, it means displacement is 0. पर displacement 0 जब होगा, कब होगा? जब final position और initial position same होगा, तब displacement 0 हो जाएगा। इतना तक समझ में आया सबको? जी सर। We want average velocity should be 0 in the question it is given. Average velocity will be 0 when displacement is 0. We know displacement by time is average velocity. Displacement will be 0. Displacement is 0 when final and initial position are same. Displacement will be 0. अब ये ग्राफ में इनिशियल पोजीशन देखिए, ये है इनिशियल पोजीशन 6. इनिशियल पोजीशन 6. इसका मतलब फाइनल पोजीशन भी 6 होना जरूरी है सर। अब ये टाइम पे देखिए, यहाँ पोजीशन 6 हो गया, ये पॉइंट पे ग्राफ में देखिए, ये पॉइंट पे 6 हो गया, ठीक है? ये पॉइंट लाई बिटवीन 1 and 2. सो 1 and 2 इसके बीच में एक पॉइंट है जिसमें 6 हो गया, सो 1 and 2 दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन between 1 and 2, मतलब 1.5. So t equals to 1.5 सेकंड में क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है? t equals to 1.5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बट दिस वन इज नॉट गिवन, ये नहीं दिया है इन द ऑप्शंस। ऑप्शन में तो ये नहीं है, ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में तो ये नहीं है।
तो इसलिए हम ये कंसिडर नहीं करेंगे। फिर अब देखिए, अगर हम ये लाइन पे स्ट्रेट जाते हैं, ये टाइम पे क्या हुआ, फिर भी 6 हो गया ये टाइम पे, पोजीशन 6। यस सर। इसका कोरोस्पोंडिंग टाइम देखिए, इसका कोरोस्पोंडिंग टाइम ये है 6 सेकेंड। सो t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो 6 सेकेंड ऑप्शन इज देयर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अगर सबको समझ में आया तो अच्छा है। किसी को कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप लोग पहले ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। पहले आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। क्या क्वेश्चन कॉपी किया आप लोगों ने? कोई आवाज नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलिए हाँ ना। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद क्या आंसर होगा बताइए।
ओके अभी देखिए नंबर 1 ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 2 सेकेंड इज 8 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to 2 सेकेंड। तो 0 to 2 सेकेंड ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर ऑप्शन 2 क्या करेक्ट है क्या सर? ऑप्शन 2 इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, velocity time graph. So velocity time graph, what gives us distance covered हमें calculate करना है। What gives us distance in velocity time graph? सर एरिया सर। Area, okay. One हम check करते हैं, distance is equals to area. हाँ, one हम देखते हैं distance equals to area. और ये एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एरिया 0 to 2 सेकेंड है, 0 to 2 सेकेंड है, 0 to 2 सेकेंड है, इसलिए हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। इट्स हाफ इनटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक है 2 इनटू हाइट, हाइट यहाँ से यहाँ तक है 4, so 4 मीटर। So distance covered by the body in 0 to 2 सेकेंड is 4 मीटर होना चाहिए था। आंसर दिया 8 मीटर, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 हम चेक करेंगे। एक्सीलरेशन दिया है ऑप्शन 2, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम कैसे लिखते हैं? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, मतलब tan थीटा, एक्सीलरेशन इज tan थीटा। और एक्सीलरेशन 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड मतलब ये लाइन का स्लोप, 0 to 2 सेकेंड मतलब ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप, और ये लाइन का स्लोप कितना होगा? एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड मतलब ये लाइन का स्लोप। So if this is theta, tan theta will be this side by this side. This side कितना होता है? ये side कितना होता है? 4 by 2. It's 2 meter per second square acceleration. यह दिया हुआ है 4 meter per second square, मतलब ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला अगर हम लेते हैं सर ऑप्शन 2 समझा नहीं सर, ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 2 में एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा होता है तो tan थीटा मतलब ये साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, tan थीटा। ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 में एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी 2 to 3 सेकंड, 2 to 3 मतलब 2 to 3 ये टाइम 2 to 3। इसका मतलब ये लाइन का स्लोप हमें निकालना है, ये लाइन का स्लोप। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें ये लाइन का स्लोप निकालना है। ये लाइन का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव, नेगेटिव। ये लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, ये लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। So ये लाइन का स्लोप नेगेटिव है, so acceleration is negative minus this side by this side। ये साइड by ये साइड होगा, ये साइड है 4, ये साइड है 2, 4 by 2। It's minus 2, sorry ये साइड 1 है, 4 by 1। It's minus 4 meter per second square, minus 4 meter per second square। So ऑप्शन 3 भी गलत है, हमें -4 मिल रहा है, यहाँ +4 है। ऑप्शन wrong। Now you check option 4। ऑप्शन 4 में क्या दिया हुआ है? The distance moved by the body during 0 to
सेकेंड 6 मीटर 0 to 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0 to 3. So हमें ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. We'll have to calculate this area. S equals to half into base into height. Base is this one 3 और height ये हो जाएगा, height ये height हो जाएगा. So कितना है? Half into 6 meters. So this is the correct option. Okay, option 4 is the correct option. So option 1 is not correct क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया 4 मीटर. ऑप्शन 1 में हमने कैलकुलेट किया 4 मीटर, इसीलिए ये करेक्ट नहीं है. अगर 4 मीटर दिया होता तो वो करेक्ट होता. Option 2 is also not correct because we have calculated it to be 2 meter per second square. We have 4 meter दिया हुआ है. That is why option 2 is also not correct. Option 2 is not correct. Option 3 is not correct because minus sign is not there. Okay. Option 3 is not correct because minus sign is not there. Option 4 is correct. Okay. अच्छा, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन 3 में अगर मान लीजिए ऑप्शन 3 में ये एक्सीलरेशन नहीं दिया है यहाँ. ऑप्शन 3 में मान लीजिए कि यह एक्सीलरेशन नहीं दिया. ऑप्शन 3 में मान लीजिए यहाँ रिटार्डेशन दिया. रिटार्डेशन ये सर तो सर 3 हो जाएगा. रिटार्डेशन ऑप्शन 3 में मान लीजिए कि यहाँ रिटार्डेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं है. रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी इन 2 to 3 सेकंड इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. के ये करेक्ट होगा? ये सर हो जाएगा. Yes, सर sir, yes. हाँ हो जाएगा ना. हाँ, अगर रिटार्डेशन दिया हुआ है ऑप्शन 3 में तो रिटार्डेशन करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा. द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी इन 2 to 3 सेकंड इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज करेक्ट. ये करेक्ट हो जाएगा. या तो या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि रिटार्डेशन नहीं दिया है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी अगर यहाँ एक माइनस दे दिया जाता, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट हो जाता. यस सर. एक्सीलरेशन लिखने से माइनस लिखना पड़ेगा. अगर माइनस नहीं लिखा, ये माइनस नहीं लिखा, तो ये रिटार्डेशन होना जरूरी है. ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? यस सर. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम देखिए. ये पहले आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए. ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए. Which of the following graph for a body moving along a straight line is possible? क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और आंसर बताइए.
ये ऑप्शन 2 है सर। आप लोग ने क्वेश्चन कॉपी किया? यस सर। सर ऑप्शन 3 सर। Okay, which of the following graph for a body moving along a straight line is possible? कौन सा graph possible है वो हमें दिखना है. Now we want to see which of the following graph is possible. Graph number 1 पे देखिए, if we take any time, suppose हमने ये time ले लिया, so ये time पे देखिए, corresponding to this point on the graph we have one speed. Corresponding to this point on the graph, we have another speed. So it tells at a given time, our body has two different speeds. Is it possible? Possible है क्या? No, not possible. Yeah, possible नहीं है because a body cannot have more than one speed at a given time. Not possible because our body cannot have more than one speed at a given time. आया समझ में? आया आप लोग को ये वाला? यस सर। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? समझ में आया? यस सर। अच्छा, ग्राफ नंबर 2 पे देखिए. ग्राफ नंबर 2 यहाँ देखिए. यहाँ ये लाइन का अगर नीचे होता है तो नेगेटिव होता है. ग्राफ नंबर 2 देखिए, यहाँ ये पार्ट देखिए ग्राफ का. ग्राफ नंबर 2 में यहाँ देखिए ये पार्ट, दिस पार्ट इज बिलो. तो यहाँ देखिए स्पीड नेगेटिव, ये पार्ट के बाद स्पीड नेगेटिव हो गया. व्हाट डज नेगेटिव स्पीड मीन? डिस्प्लेसमेंट सर। अरे नहीं, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव स्पीड का कोई मीनिंग नहीं है. यस सर, impossible. Negative speed has no meaning. So this graph is not possible. Not possible because negative speed has no meaning. ठीक है? Because speed, this graph has no meaning because the speed cannot be negative. Negative speed का कोई meaning नहीं है. ठीक है? Graph number 3 पे देखिए. You look at graph number 3. You take any time, कुछ भी एक टाइम ले लीजिए. ये टाइम अगर हम ले लेते हैं तो corresponding to this point you have one speed. Corresponding to this point you have another speed.
So graph number 3 पे भी देखिए एक ही टाइम पे दो स्पीड है. So this is also not possible. Not possible because of this reason. Because of this reason. ये जो reason है ये reason के लिए it is not possible. अभी ग्राफ नंबर 4 पे देखिए ये टाइम एक्सिस और पोजीशन एक्सिस आप लोग देखिए क्या ध्यान दीजिएगा ये इंटरचेंज कर दिया टाइम और पोजीशन. एंड एट ए गिवन टाइम कोई भी एक टाइम ले लीजिए. You have only one position. At any time, you have only one position. At a time, you have one position. Okay, so graph 4 is the possible one. Graph 4 is the possible one. Why it is possible? Because at a given time, कोई भी एक टाइम ले लीजिए ये टाइम अगर हम ले लेते हैं तो you have only one position corresponding to this one. Okay, all of you got this one? So 1 is not 1 and 3, they are not possible because at the same time they cannot have more than one position. Right? Okay, 1 and 3 are not possible because at the same time they cannot have more than one position. 2 and 2 is not possible. 2 is not possible because speed cannot be negative. Spark पे speed negative हो गया. Negative speed का कोई meaning नहीं होता है. So the only possible is fourth one. Fourth one is possible because एक ही time पे एक ही position है. At one time you have only one position. Okay. So one more graph, one more problem. आप लोग फटाफट बताइए. Which of the following time displacement graph represents two moving objects P and Q with zero relative velocity? हाँ बताइए. सर B2. We should have zero relative velocity. So relative velocity हम कैसा लिखते हैं if they are moving in same direction? Same direction सर माइनस हो जाता है. VP minus VQ. And that should be zero. Okay. Same direction पे we'll subtract and that should be zero. So relative velocity, it's VP minus VQ should be zero. इसका मतलब है VP is equals to VQ. और velocity हम tan theta लिखते हैं. Velocity same इसका मतलब है theta should be same. Theta same जब होगा तो क्या होगा? Lines will be parallel. Yes sir. Will be parallel. 2 is parallel sir. So 2 is parallel. ठीक है समझ में आया? Yes sir. So relative velocity option 2 ही होगा. सर पोजीशन टाइम ग्राफ सर डिस्टेंस सर टाइम पोजीशन ग्राफ किसको डिनोट करते हैं सर? हाँ? टाइम पोजीशन ग्राफ सर. टाइम पोजीशन और टाइम डिस्प्लेसमेंट सेम है. चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सेम ही हो जाएगा. ठीक है. ये पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट.
चेंज इन पोजीशन। सो सेम ही हो जाता है एक्चुअली, हाँ सेम ही हो जाता है। जब पोजीशन में चेंज होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। Yes, sir. Okay, any questions you want to ask? Okay, we'll stop here today. Thank you so much. Thank you, sir.